A very good morning to all of you. I am Nitin Vashne, Assistant Professor in SITS College, Bhopal. Today I am going to teach what is Python variables. So let's start. What is the variables? First question is what is the variables? In general language, we say that variables are those containers which store some variable, which store some data, which store some values. So similarly, the variables are same, but the type of the declaration and the mode of the declaration should be somewhat changed in Python. So basically the variables are containers for storing the data. In different type of programming language, we in Python we doesn't need to give any command to declare a variable. Okay, and now in another languages, for example in Java, you are going to just declare the integer like int x equals to, or string for string str equals to, for array ar equals to. No, in Python variables you doesn't need any declaration of variables. Just write x equals to 5, so it will easily understand that x is a integer, and y equals to hello world, so y is a string type of variables. So you cannot declare any different types of particular types of variables, like in different languages you should write that int x equals to 4, string x equals to Sally. So where it directly x equals to 4 and x equals to Sally, x is depend on integer and x depend on string. So the string should be, and string variables can be declared either by using single quotes or double quotes. Whenever you need to declare your string types value, you just need single quote or double quote. Like x equals to John, whenever you print x, it will create the output John, and also x on a single quote, then also giving it's a John. So whenever you need to write for string, you should give quote, or whenever you need integer, so just write number. So there must be some rules for declaring the variables. The variables can have a short name like x and y, or you can uh, take any value 1 to, sorry, you can take a b c x y z, or more descriptive name like ages, car name, total volume, and you also use your name as a variable. Okay, now having some rules. The variables must start with a letter or underscore character. So means the variable should be started by any letter, and or you can use the underscore value. You cannot start your variables by using integer value like 1, 2, 3, 1.1, 1.5. No, a variable can only contain alphanumeric characters and underscore. So alphanumeric characters, you know that dollar or star etc, and alphabets a z 0 to 9 and underscore etc. So the variable names are so case sensitive. You can see that I can write three different types of ages. In small caps age, then a is capital, and third one is all caps age. So all these ages will differentiate, or we can say that represent the three different types of variables. So it's a case sensitive. Now you can see that x, we can declare a three variables having the three strings orange, banana and cherry. So in this program x y z, so you can just write all three variables in the single line, and it should easily run. You can see that x y z three variables we declared, and in x we assigned the value orange, in y we assigned the value banana, and z we assigned the value cherry. Okay, now we can print all three variables: print x for x, print y for y,
and print Z for Z. Then what is the output? Output is banana, orange, banana and cherry. X represent orange, Y represent banana and Z represent cherry. Okay, is it clear? So you can assign the same value to the multiple variables in a one line. You can assign a single value to the multiple variables in a single line, right? You can see that x equals to y equals to z equals to orange, means you can assign the orange to x, orange to y and orange to z whenever you want to get an output. So you can assume what is the output is. So you can see that output is orange, orange, orange. Means you assigned a single value to different three types of variables and you should get a three different outputs. Okay. Now, to combine both text and variables, Python use a plus character. Whenever you need to add some text, or you can say add some strings, so you can use the operator, that is the plus operator. Now here I declare x variable and assign the value awesome. So I want to print Python is awesome. So just write Python print Python is plus x. So whatever the value of x, it should be comes here. So see what is the output is. Output is Python is awesome. Okay. So whenever you need to attach string, you can use plus operator. Okay. So x equals to Python is y equals to awesome, z equals to x plus y. बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या होता था कि अगर हम लोग कोई वैल्यू इंट x इक्वल्स टू 5 देते थे, एक्स वाई इक्वल्स टू 10 देते थे, z इक्वल्स टू x प्लस 5, सो प्रिंट होता था 15. नाउ कभी भी इंटीजर के अलावा अगर मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ तो स्ट्रिंग कभी भी डायरेक्टली इस तरीके से ऐड नहीं होता था, बट इन पाइथन यू कैन डायरेक्टली ऐड योर स्ट्रिंग. So output is Python is awesome, where Python is coming from x and awesome is coming from y, and we can just add both of them and print z. So x में मैंने Python is डाला हुआ था, y में मैंने awesome डाला हुआ था. इट्स लाइक अ कंटेनर. इन दोनों का एडिशन करके मैंने किस में पुटअप कर दिया, z में. देन इस z को मैंने क्या करा, प्रिंट करा दिया. देन प्रिंट कराने के बाद मेरे को जो आउटपुट मिला, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टू अबव वेरिएबल्स, दैट इज Python is awesome. सिमिलरली आपको कोई दूसरा ऑपरेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन नॉट ईजिली डिफाइन कि प्लस जो है वो मैं एडिशन के लिए यूज़ करूँ या स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज़ करूँ. सो वेन एवर यू कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग एंड वेन एवर यू नीड एडिशन ऑफ द टू इंटीजर, यू जस्ट सिंपली यूज अ सिंगल ऑपरेटर, दैट इज प्लस. सो व्हाट इज द आउटपुट? Output is 15. Okay. Now again another type of example. You can see that x equals to 5 and y equals to zone. There are two different types of variables, one is string and one is integer. And whenever we add, or we can say that concatenate, what is the
What is the output? Some of them assume that it will give a compile time error, but it doesn't have any compiler, so it doesn't give any compile time error. So what is the answer? Just check. Type error, unsupported operands. Okay, so means इसमें कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, इसमें एक एरर आएगा, इट डजेंट सपोर्ट द ऑपरेटर. ऑपरेटर को हमेशा उसके ऑपरेंड्स में लेफ़्ट और राइट सेम टाइप की वैल्यूज़ होनी चाहिए, वेदर स्ट्रिंग और वेदर इंटीजर. ओके, आप एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू को आप ऐड कभी भी नहीं कर सकते. Now, what is the global variables? The variables that are created outside of the function, that is known as global variables. Means आप जो भी function बनाएंगे उस function के बाहर जो भी variable रहेगा, that is the global variables. And it can be used inside or outside the function. आप इसको inside और outside the function both जगह use कर सकते हैं. For example, global variable मेरे पास यहाँ पर x है, x equals to awesome. Now defined my function, एक function define करा हुआ है. Now मेरे को इस फंक्शन के अंदर मैंने x को कॉल करा हुआ है. ओके, सो यू कैन हियर सी दैट if you create a variable with the same name inside a function, this variable will be local and can only be used inside the function. The global variable with the same name will remain as it global with its original value. Means अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू कभी भी एंटायर सिस्टम में चेंज नहीं होगी. मींस अगर x को मैंने ऑसम वैल्यू असाइन करी है तो ये एंटायर सिस्टम में ऑसम देगा. बट अगर आप सेम वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे तो फंक्शन के अंदर मे बी आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है माय फंक्शन, उसके अंदर x की वैल्यू को मैंने फैंटास्टिक दिया है. जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरे को मिलेगा पाइथन इज़ फैंटास्टिक. बट जब मैं ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करूँगा ना तो ये फैंटास्टिक वर्ड कॉल नहीं होगा, इसकी जगह कॉल होगा माय ऑसम, बिकॉज ग्लोबल वेरिएबल डजेंट चेंज इट्स वैल्यू थ्रू एंटायर द फंक्शन. ओके, इज इट क्लियर? Now you can see the output. The Python is fantastic and Python is awesome. You can see here मैंने जो फंक्शन बनाया था, पहले मैंने फंक्शन को लोकल फंक्शन को कॉल करा. लोकल फंक्शन के अंदर सेम टाइप के वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने फैंटास्टिक दी थी तो फैंटास्टिक वैल्यू कॉल हुई. बट जब मैंने माय फंक्शन कॉल करा जो कि ग्लोबल वेरिएबल था, मैंने ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे कोई डिक्लेयर नहीं करा है, ग्लोबल वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट पुट होके आया है, तो अनदर कॉल इज पाइथन इज ऑसम. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. यू कैन चेक हियर. Text type is string, numeric int float complex, sequence is list tuple range, mapping type is dictionary, set type set from set, booleans basically used for true false functions, binary types, bytes, byte array and memory size. Okay, so I hope you can easily understand. And you also just use a function type to identify which type of variables you have. Like if you doesn't know which type of variables you have, whether it's an integer, whether it's a boolean, whether it's a string, so just type x and it will output giving string. So here we can declare that x equals to John and print type x, output is string. Where x equals to 5, you can write print type x, it will output give integer. Okay, so thank you. I hope you can easily understand the variables in Python. Okay, thank you. Stay tuned and keep learning.